Hi everyone, welcome back to our podcast, Nothing Millennial About Us. This is your host, Jasraj Sokhi, and today I'm joined by Ashmit Roy and Aman Chandra. Hi to both of you. Hello. Hi Jesse. Yeah. So today, continuing in the spirit of health that we recently did a podcast on, and in that podcast, I think we focused more on the physical aspects of health, and so I thought that we should also give equal importance to the mental health aspect because we didn't talk about that a lot in the last podcast. So this time we'll be talking about that a lot more, and that's why I also brought in Aman, who's a kind of expert in this area. So Aman, would you like to give a bit introduction about how you are very the right person to talk to about this? So I'm blushing a little bit. I don't know why I've been called an expert, but yeah, thanks for that. For better or for worse, I've been part of a field now which I refer to as spiritual growth, and that in itself is something which does help you in improving all aspects of your life, which includes health and then down to mental health. So yeah, in that sense, my work also, my startup Life Positive, basically deals with personal and spiritual growth and alternative healing. So hopefully I can add some value to this podcast today. Definitely. We do expect that. And also we have Ashwin Noah, who will also give some personal examples, I think, of his the stress that he's been facing lately. लेटली नहीं, सिर्फ वर्क रिलेटेड स्ट्रेस नहीं, मतलब बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं जो एजुकेशन और भी एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि पर्सनल लाइफ में आपके साथ कुछ हो सकता है जिसका स्ट्रेस हो रहा है तो वर्क पे इम्पैक्ट करे. तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही निगलेक्टेड टॉपिक है हमारे यहाँ, और प्रॉबेबली अगर आप डिप्रेशन या एनजाइटी या स्ट्रेस के बारे में बात करें तो आपको थोड़ा नॉन मैच वो समझा जाता है हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी में. आई रिमेंबर कि एक हमारे कलीग थे, उनको थोड़ा सा वैसी प्रॉब्लम थी मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में. तो मेरे बॉस ने अपेरेंटली कहा था कि बी अ मैन. तो ये बी अ मैन वाला कल्चर ये बहुत बेकार है कि बी अ मैन तो क्या मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती मेंटल हेल्थ की. मेंटल हेल्थ इज लुक्ड डाउन अपॉन. बहुत ज़्यादा considered as if you are if there's something wrong with you, if you have some mental health issue, whereas it is a very simple thing. It's something like if somebody has high blood pressure or diabetes, it's just like that. एक्चुअली एक साइकेट्रिस्ट है मेरे जानने वाले, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं आपकी बॉडी में जो जब फंक्शन करना थोड़ा ख़राब कर देते हैं, तो उसके अलग अलग नाम कर दिया हमने. जैसे लिवर में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको इतना ख़राब नहीं मानते. बट ब्रेन इज़ ऑल्सो एन ऑर्गन जो कि पूरे टाइम काम करता है बहुत ज़्यादा. अगर उसमें मान लो कभी कुछ ऐसा हो जाए तो दे कैन बी वेरी वेज. मेडिसिन तो अलग रिजॉर्ट है, मतलब बहुत सारे उसके पहले भी है, और मेडिसिन तक भी बात पहुँच गई. जो इतना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप एकदम स्टिग्मा इसमें लगा दे कि कुछ बहुत गलत हो गया. बट दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती है आपके साथ. Right. And actually, the reason we really want to highlight this topic is that because when it especially comes to Indians, there actually has been a recent like a spike in mental health issues, and for a very in a very negative sense, and there have been a lot of studies that actually have gone through, and I was reading about them, that how the issues of depression and mental illness are rapidly rising in the Indian population. So there was a recent survey by Cigna Health Insurance Company, which according to that data, around 95% of Indian millennial population, that is between the age group of I think 18 to 35, they are under some kind of stress, which is much higher than the global average of 86%. So that already shows that the Indian average for stress is a lot higher, and according to a survey also, a lot of the stress can actually be attributed to work. People who are employed basically, and a lot of stress comes from that compared to the personal health. And there was another survey by the National Mental Health Service India, which showed that 13% of Indian adults actually are in need of support for mental health issues, which means that it's not just stress; it has actually accelerated to serious mental issues such as depression or anxiety, and they all actually are in need of such proper medical attention. So that really shows that India has is much higher incidence of mental health issues, and so I mean there are a lot of factors that play into this, but
according to most sources, I would say that this work culture of India that has sort of developed in the last 2 decades is major culprit, because as most of us would know, that India has kind of that always on work culture that we recently discussed also, where basically you never actually leave your office. You're in a way, or you might be at office or at your home, but you're always working. And whether it's a some project that is hangs over and you go home and you're still working on that, or whether you're taking some call, some business call. So in that sense, you're never really free of it. And even at it's very common and all of us would can attest to that fact that sometimes you might even get an email at 11 p.m. or even later, and still your boss or someone would expect you to reply to that. So that in that sense, because you cannot never ever disconnect from your office life, then that becomes a really big problem. Because and most people sort of have that when they go home, they can sort of de-stress, they can spend time with their family, or even watch the television or anything, and that can help to sort of alleviate the stress that was caused in your office day. But when you don't even get that time and you're still sitting at your laptop, then you really never get any personal time to think about anything or relieve your anxiety. So that sort of keeps building up and up, and it further accelerates when you are sort of growing in your career. And because the higher you go up, the more and more pressure comes down to you, and because there's no way to sort of alleviate that. And I was also looking at another survey which mentioned that when it comes to vacations and holidays also, Indians are like lagging behind the most countries, and most Indian workers do not take holidays even when which are they are free to take. So people are India are less ready to travel or take an international vacation. So these opportunities also, where you can actually go away from office and probably you don't have to carry your laptop, those opportunities also very less, because again, I think the work culture is not that well suited, because there's an expectation that you should always be connected to your office, and even if you're on vacation or you're staying at home, you should always be ready. It should always be easier to access you for any emergency or that kind of stuff. So, and when if you're not at your job, then there's an assumption that you're not serious about it, and the number of hours that you put in, that is a representation of how seriously you take your work and how hardworking you are. So that mismatch of an actually efficient person and a hardworking person versus a person who just keeps sitting in the office for like 10 or 12 hours is a big problem that we people face. ये फ़ोन कॉल वाली से मैं काफ़ी रिलेट कर सकता हूँ. मतलब एक मुझे याद है जब मेरा बर्थडे था तो मैं ऑफिस आया था एंड आई गॉट लाइक 70 कॉल्स और समथिंग. तो मुझे कॉल से फोबिया हो गया था. मुझे जब भी फ़ोन बजता था मुझे ऐसा लगता था कि कोई ऑफिस के लिए बुला रहा है क्या है. मतलब फ़ोन हैंडल करते हुए फ़ोन से ही नफरत हो गई थी कुछ दिन तक. बट मैं ये चीज़ देखता हूँ कि काफ़ी कुछ जो डिप्रेशन और एनजाइटी की जो रिसर्च है ना, वो मिडिल क्लास ओरिएंटेड होती है. मतलब ये भी एक स्टिग्मा है कि लोग कहते हैं इट्स अ रिच मैन्स डिजीज़. मतलब जो पैसे वाले हैं, अपर क्लास है, उनकी ये बीमारी होती है. बट बहुत सारी अनडायग्नोज डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है जो प्रॉब्ली लोअर क्लास और वर्कर्स को भी होती है. मतलब आप उनकी कंडीशन देखिए, और आपने देखा होगा कि कई बार इंडिया में भी होता है जो थिनर का नशा करते हैं या बहुत ज़्यादा ड्रग प्रॉब्लम है, तो वो भी एक तरीके से डिप्रेशन को कॉम्बैट करने का भी तरीका होता है. तो खासकर हम इसलिए इंडिया में मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ये इश्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे ही बहुत डिस्पैरिटी ऑफ इनकम है. तो अब ये सोचिए, एटलीस्ट मिडिल क्लास में आपको पैसा मिल रहा है किसी काम के लिए, अगर आपको पैसा भी नहीं मिल रहा और बुरे वर्किंग आवर्स है तो वहाँ पे क्या होता होगा. और तो प्रॉब्ली वो खुद नहीं समझ पाते होंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम है, एनजाइटी की या डिप्रेशन की. तो एक बहुत बड़ा स्टेट ऑफ सोसाइटी है जो कि प्रॉब्ली अनडायग्नोज डिप्रेशन, जिनको प्रॉब्ली डिप्रेशन का मतलब भी नहीं पता और कभी दिखाएंगे भी नहीं डॉक्टर को, बट वो रेगुलरली फेस कर रहे हैं उसको. वो देसी शराब की कोई बॉटल ले लेंगे, पौवा ले लेंगे, ड्रग्स ले लेंगे, उससे काउंटर कर रहे हैं. बट दिस रियली शोज की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये इंडिया में. हाँ, डेफिनेटली, बिकॉज जैसे मैं अपने कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स की कहानी भी सुनता हूँ कि जैसे कई गांव है जहाँ पे 50-60 किलोमीटर दूर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर ही होता है जहाँ पे लाइक पैरासीटामोल और ये 3-4 ड्रग्स ही मिलती हैं. तो वो लोग तो लाइक बेसिक अपने बुखार और इन सब का भी शायद उनके लिए ट्रीटमेंट मुश्किल है. तो डिप्रेशन तो आई थिंक उन्होंने कभी वर्ड सुना भी नहीं होगा, और उसके लिए दवाइयाँ के लिए एक्सेस और जो साइकेट्रिस्ट की जो एक्सेस तो आई एम श्योर उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है.
स्पेशली जैसे तुमने कहा था वेज और वो सब, जो उनकी इनकम ही इतनी कम है. आई थिंक नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट आया था कुछ, तो उसमें क्या था कि कुछ उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था कि मेंटल हेल्थ डॉक्टर प्रोफेशनल पर पॉपुलेशन कितना होना चाहिए. मुझे फिगर तो याद नहीं है, बट जो एक्चुअल फिगर और जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया था, जो एक्चुअल था उसमें कुछ थाउजेंड्स का फ़र्क था. मतलब वो कुछ 0.001% था एज कम्पेयर टू एक्चुअल फिगर. तो मेंटल हेल्थ की ये सिचुएशन है यहाँ पे एक्चुअली इस कंट्री में. डेफिनेटली. एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे कि हमने बाइफिकेट तो कर दिया है फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है दोनों के बीच में. आधे से ज़्यादा जो फिजिकल हेल्थ के इश्यूज हैं दे बिगैन बिकॉज ऑफ सम मेंटल हेल्थ इशू. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अब आपका कहीं से ब्लड प्रेशर ही सिंपल ले लो, उसका मेन कॉज क्या है? स्ट्रेस. मेंटल हेल्थ इशू क्या है? वो स्ट्रेस है ना, वो स्ट्रेस और डिप्रेशन है. जिसको डिप्रेशन है उसको फिजिकल हेल्थ में तो 100 चीज़ें होंगी. जो दिमाग से खुश है उसको फिजिकल सेम एनवायरनमेंट में 10 की जगह वो 2 फिजिकल हेल्थ की इश्यूज होंगे. तो इट स्टार्ट्स ऑलवेज फ्रॉम द माइंड. द माइंड कंट्रोल्स एवरीथिंग. और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अब मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ. मैं आज मुझे लगता है बहुत सारे लोग आई वुड बी इंटरेस्टेड टू नो कि लोग कैसे मेरे ज्ञान को इंटरप्रेट करेंगे आज. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिस्पॉन्स. एनीवेज, तो सबसे लेटेस्ट तो नहीं कहूँगा मैं, बट ये काफ़ी रिसेंटली मैंने एक चीज़ समझी थी. तो इन लाइफ हमारा जो भी होता है इन्वायरमेंट, उस पर कंट्रोल नहीं है हमारा. आपको जितने घंटे काम करने हैं, आप कैसा इन्वायरमेंट है, कैसे लोग हैं, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है. आपका कंट्रोल जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उस पर कंट्रोल नहीं है टेक्निकली. आपका कंट्रोल किस चीज़ पे है कि उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा आप पे और आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा. तो ये बहुत ही दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, और समझने के बाद भी वो इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है. मैं इसको खुद ही बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ. मतलब इफ़ आई एम फॉर एग्जांपल आई एम रनिंग माय ओन स्टार्टअप, उसमें स्ट्रेस तो आई वुड से इज़ पॉसिबली नेक्स्ट लेवल. आज ही before this podcast I was sharing with you all certain concerns that every day is like a pressure cooker. But what I have learned is कि वो तो रहेगा, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है. But now how I deal with this and how I react to it, that is in my control. और धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट मैं ला रहा हूँ. तो ये सबसे पहला एक साइकोलॉजिकल ट्रिक कह लो, ये एक मेंटल ट्रिक कह लो, एक स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी ट्रिक कह लो, जो कहना है कह लो. बट इट्स ट्रू. आई मीन there's if you are in a setup where you are facing a lot of problem, it's up to you whether you want to get depressed or you want to just look at it on a fact basis and say कि जो भी हो मैं खुश रहूँगा. इस पे शायद हमारी जस्सी और रश्मित से डिबेट भी पहले हो चुकी है, बट दिस इज समथिंग विच आई थिंक कैन बी थॉट अबाउट. नहीं, जो आपने कहा कि आपका पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है कि मतलब आपको इन द सेंस आप कंट्रोल कर रहे हैं. मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली पॉजिटिव रहना. तो ये तो बहुत फैंसी वर्ड है, सब बोलते हैं पॉजिटिव रहो, उससे हमेशा पॉजिटिव रह नहीं सकते. हाँ, ये तो है. बट वॉट यू कैन कंट्रोल इज द रिस्पॉन्स, कि आप उसको कैसे आपके बॉस ने आके खूब सुनाया. इट्स अप टू यू नो कि उसका क्या आप रिस्पॉन्स लेते हो. अपने आप को सोचते हो आई एम यूजलेस, आई एम सो एंड सो, गुस्सा आता है, वो सब आपके कंट्रोल में है. वो पहली बार आपको लगा कि नहीं मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरे को आ गया, मेरे को रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है. लाइक कोई आपको थप्पड़ मारे तो इमीडिएट रिस्पॉन्ड होता है, मैं भी थप्पड़ मार देता हूँ. तो वो पहले एक लर्न करना पड़ता है वो ट्रिक, कि अभी इसका रिस्पॉन्स मेरे हाथ में है, कि मैं उदास हो जाऊँ क्या हो जाऊँ वो मेरे हाथ में है. ये दिस इज व्हाट द फर्स्ट आई थिंक ये काफ़ी फेयर पॉइंट है. बट इससे मुझे ये लगता है कि आई थिंक नॉट एवरीवन हैज दैट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि दे आर टेकिंग इट नेगेटिवली, यू नो, बिकॉज there is no clear way to identify, like for most people, that whether their response is negative or, because a lot of people I think always feel that
what they are doing is right when they face such situations कि अगर मान लो उनके like जॉब में कुछ परफॉर्मेंस उनकी कम हो रही है या whatever जो उनका सेल्स फिगर मान लो अचीव नहीं हो रहा, so whatever the way they respond, I don't think many people can even identify कि they are responding in a positive way or a negative way, you know. So I think वहाँ पे भी थोड़ा ये माइंड में आता ही नहीं है. That is why I'm bringing this topic up कि एक सेकंड रुक के ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है. आपके सामने एक और एग्जांपल, बहुत ही क्लासिक एग्जांपल इंडिया के लिए है. ट्रैफिक में कोई जा रहे हो आप लेट हो, आपके सामने आगे कोई गाड़ी आपको कट कर देता है, वो कोई बहुत बार हॉर्न मारते जा रहे. आधे से ज़्यादा दुनिया लोग बोलते हैं कि हम इतने इरिटेट हो जाते हैं ऑफिस ड्राइव करते हुए. क्यों भाई? इरिटेट किसने किया? आप खुद हुए हो. वो आया सामने, ठीक है, उसने आपको कट कर दिया, उसने हॉर्न बजाया, तो ठीक है, आपको क्या, उसको आपने अलाउ किया ना उस चीज़ को आपको बिल्कुल ही परेशान करने के लिए. आपने उसको घुसने दिया अपने माइंड स्पेस में, अपने जो भी कहना चाहो. नहीं, इसमें जो है ये पॉइंट सही है कि हाँ, हम अलाउ कर रहे हैं कि अगर बॉस ने आपको डाटा, आपका मूड खराब है, आप अपने आप को अलाउ कर रहे हैं कि आपका दिन खराब हो रहा है. बट इसमें मेरा ये पॉइंट है कि जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं जब लाइफ में, तो एक जो नेचुरल स्टिमुलाई होता है वो यही होता है कि आप शेल में जाते हैं. आप, ये नेचुरल है कि आप डिप्रेस्ड होंगे अगर आपके साथ कुछ खराब हो रहा है. मेरा पॉइंट ये है. बट हाँ, आपको उस तरीके से आपको ट्रेन करना पड़ेगा कि आपको ये मानना पड़ेगा कि ये लाइफ का पार्ट है एंड दिस शुड अफेक्ट टू यू इन ओनली इन सर्टेन अप टू सर्टेन एक्सटेंट. मतलब कुछ लेवल तक ठीक है, आपको किसी ने कहा हाँ आपको सीरियसली लेना है चीज़ों को कि क्या करना है, बट ये ना हो कि आप एकदम ही शेल में डिप्रेस चल रहे हैं. बट नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन यही होता है कि जब आप पे कुछ बुरी चीज़ होती है तो आप थोड़ा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में जाते हैं. बट ये आप पे है कि आप कैसे उसको कंट्रोल करें. मतलब आपको खुद पर्सनल एफर्ट या चीज़ें लेनी पड़ेगी वहाँ पे. इसमें दो चीज़ें, एक यहाँ पे शायद हमने क्लब कर दिया है, विच इज़ दैट इफ समबडी इज सेइंग समथिंग टू यू और समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग विद यू, तो ऐसा नहीं है कि उसका जो रिस्पॉन्स जो अब हो रहा है, दैट व्हेन यू आर टेकिंग टाइम एंड थिंकिंग अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दिस, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अगर इसमें से कुछ सीखना है तो आप ना सीखो, उसको फीडबैक ना लो. नहीं, वो सीखे. बट जो सपोज पर्सन लूजेस जॉब, उस जॉब चली गई, उसकी फैमिली सपोर्ट करने को, तो दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं. एक है कि वो सीरियस हो गया, उसको लगा हाँ जॉब ढूंढना है, कुछ है, ही डिसअपॉइंटेड. एक दूसरा होता है कि वो इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग स्ट्रेस में आता है कि वो शायद जॉब भी नहीं ढूंढ पाता अगली. वो एकदम परेशान रहता है, अब क्या करूँगा, पैसे कैसे खिलाऊंगा. दो चीज़ें, एक है कि उसे हाँ कंसर्न है कि फैमिली को देखना है, दो एक्सपेंसेस है मैनेज करने हैं, वो सब चीज़ें हैं, इज डिसअपॉइंटेड. वो सब नेचुरल रिएक्शन है कि दुखी होना इज ओके. बुरा हुआ ऑब्वियसली दुखी होगा. बट इसमें ये भी होता है कि वो इतना ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है कि अब अगली जॉब या अगले इंटरव्यू के लिए वो एंजाइटी होगी, अगर ये नहीं मिली तो मेरा क्या होगा. तो प्रॉब्लम इंटरव्यू में फंबल अप करेगा या कहीं पे भी. अब अश्मित एक चीज़ बताओ यहाँ पे कि हैज़ वरी एंड एंजाइटी एवर हेल्प्ड एनीवन? It hasn't helped, but it happens. Then naturally. why do we take it? But it happens naturally. My point is that. But if we know it doesn't help, then why can't we do something about it? नहीं, we should do. We should do. We should try to मतलब उसे mitigate खुद ही मैं ज्ञान दे रहा हूँ और मैं खुद ही आज एडमिट कर रहा हूँ. नहीं वही मैं खुद ही इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता हूँ. नहीं, this is a very golden ideal कि इसकी तरफ हमें स्ट्राइव करना चाहिए, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडियल है. हार के नहीं रहूंगा मैं, ये समझ के रहूंगा मैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है. बट कमिंग बैक टू द इनिशियल टॉपिक ऑल्सो कि यू नो आई एग्री कि इट्स if you are very aware of what is happening to you, you probably have that option in hand कि I take it in a positive sense or in a negative sense. But what I think Indian context में for whatever reason, because we are not very expressive people and हम काफ़ी चीज़ें internalize करने की हमें ज़्यादा आदत रहती है. We are not, don't talk about it with friends or family and everything. So because you never sort of that external perspective कि what to do, then that's why people take it in a very mostly in a negative sense, and you know, then that is what becomes harmful, because again then that is why there's probably a cause कि India में depression rates और ये सब higher क्यों है, because again I think maybe as a culture or maybe as a society Indians are more prevalence of depression is probably higher because we tend to internalize it, take it in a negative sense. So I think इसलिए ये probably rates ज़्यादा high है. But like I also want to talk about कि you know once you have it, how to like sort of help people, you know, like, or probably help yourself, because the problem with depression is that people, those who are depressed, don't reach out to others. So I think there's also that angle that I want to talk about, that if you feel that you are depressed, or probably you feel that some other friend of yours is in a depression, what are the resources available that
that people can How turn to get out of it. Yeah, I mean, because not everyone is ready to accept it. I think that's the number one fault. एक जैसे तुमने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि जो लोग बोल नहीं पाते, या मतलब कई सारी चीज़ें हैं कि जो बहुत पहले सॉर्ट हो जाती है बट अपनी प्रॉब्लम लोग शेयर नहीं कर पाते. इसका मेन रीज़न है कि जो हमारी मॉडर्न इकॉनमी है इसमें बहुत ही इंडिविजुअलाइजेशन हो गया है. मतलब यहाँ आप एक बाहर से आ रहे हैं, आप कहीं रह रहे हैं, आपका हार्डली इंटरेक्शन ऑफिस से बाहर लोगों का धीरे धीरे, मतलब जो पहले कम्युनिटी वाली फीलिंग थी अब वो सोसाइटी में रही नहीं. तो पहले गांव में या छोटे शहरों में या मतलब इवन बड़े शहरों में भी तो एक कई सारे लोगों सपोर्ट सिस्टम बहुत होता था आपका, नॉट ओनली मेंटली इवन फाइनेंशियली, या कुछ भी क्या आपका नहीं कुछ अच्छा चल रहा, बहुत सारे लोग इसे सपोर्ट कर सकते हैं या आप बात कर सकते हैं. तो ये नॉट इवन इन इंडिया नहीं, यूएस में भी ऐसे होते हैं चीज़ें जहाँ पे आदमी इतना अकेला हो गया है शहरों में कि अब वो कुछ बात ना बोल पाता है ना कुछ दूसरा समझ पाता है कि वो क्या बोले वो क्या समझे. एंड मेंटल हेल्थ में सबसे बड़ा इशू है, मैं मतलब पर्सनल एग्जांपल बता सकता हूँ कि तो पहली बार तो आपको एक्सेप्ट करना हो कि आप रियली डिप्रेशन या एंजाइटी, क्योंकि आप बोल नहीं सकते कि आपको एग्जैक्टली है क्या. तो ये बताना कि ये अंडरस्टैंड करना कि एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी मेंटल कोई इशू, मतलब इशू इन द सेंस कि देयर इज सम प्रॉब्लम दैट साइड विद मी रादर दैन कि कुछ और वर्क रिलेटेड. क्योंकि हम सोचते हैं कि मेरा शायद एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है या मेरा जॉब नहीं मिल रही, ये प्रॉब्लम है. बट कहीं ना कहीं उसका मेन रीज़न ये होता है कि आप कहीं ना कहीं खुद अंदर दिमाग से परेशान है. और मैंने ये फील किया है कि जब आप एक्चुअली परेशान नहीं होते हो मेंटली, जब आप मेंटली रिलैक्स होते हो तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाता है जितनी बड़ी प्रॉब्लम है. मैंने लिटरली देखा है जॉब हंट के प्रोग्राम में कि जब फर्स्ट थिंग मैं जॉब हंट में शुरू किया था कि मेंटली रिलैक्स होना, कि मैं नहीं और सोचना चाहता, मैं थोड़ा सा चिल करना चाहता हूँ. और जब वो हुआ तो अपने आप रास्ते खुलते हैं. तो रास्ते तभी खुलेंगे जब आप दिमाग में स्ट्रांग है. अगर वहाँ वीकनेस या वहाँ इश्यूज आते हैं तो फिर अपने आप चीज़ें बंद होने लगती हैं चारों तरफ. एक थिंग ये आई थिंक जो वर्क कल्चर का एक और पॉइंट उठाऊंगी, जैसे काफ़ी ज़्यादा आता है बिकॉज यू आर ऑलवेज इन दैट स्टेट ऑफ आउट परफॉर्मिंग अदर्स. यू ऑलवेज एक थोड़ा आप पे प्रेशर रहता है कि अपने टीममेट्स को आउट परफॉर्म करना है. एंड सो यू नो इवन व्हेन यू इफ यू आर अवेयर इनफ की सॉर्ट ऑफ की दैट यू आर फीलिंग नेगेटिव एंड ऑल्सो यू माइट थिंक दैट यू नो इट्स नॉट वर्थ इट कि मैं अपने आप को इससे निकालूँ. बिकॉज मान लो लाइक प्रॉब्ली अगर इफ़ यू आर सीकिंग ट्रीटमेंट यू हैव टू कट डाउन ऑन योर वर्क आवर्स और ऑफिस में थोड़ा कम इन्वॉल्व हो सकते हो. यू हैव टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ. और फिर उसमें एक वो आता है कि अगर मैं कुछ टाइम के लिए अपने आप को पीछे कर लेता हूँ या तो मैं कम परफॉर्म करता हूँ तो फिर लाइक मेरा आगे आके प्रमोशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे. तो लोग एक वो एक सॉर्ट ऑफ फीडबैक लूप बैक हो जाता है कि बिकॉज तुम वो अपॉर्चुनिटीज नहीं छोड़ना चाहते और तुम्हें पता है कि तुम नेगेटिवली फील भी कर रहे हो. बट तो एक वो होता है ना कि चलता है टाइप हो जाता है एटीट्यूड कि क्या फ़र्क पड़ता है मेरे को वैसे भी डिप्रेशन में हो ना हो, एटलीस्ट मैं जॉब पे परफॉर्म कर रहा हूँ. बट यू नो काफ़ी जो मैं ये भी पढ़ा था कि एक्चुअली इट्स अ नेगेटिव, ये ऐसा होता नहीं है. बिकॉज जितना तुम डिप्रेशन सब में मेंटल हेल्थ तुम्हारी लॉस हो रही ख़राब हो रही है उतना ही तुम्हारा परफॉर्मेंस गिरने लगेगा. एंड पीपल एक वो बहुत एक फीडबैक साइकिल बन जाता है कि तुम और काम और मेहनत करने की कोशिश करते हो और तुम्हारा और मेंटल हेल्थ ख़राब हो रहा है और तुम्हारी परफॉर्मेंस गिरती जा रही. तो एक तो दरअसल एक साइकिल में अटक जाते हो तो जिससे तुम निकल ही नहीं सकते. और आई थिंक वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने कुछ आपस नॉट एग्जैक्टली सेम बट मैंने अपने ऑफिस में भी देखी थी कि लोग इतना फंस जाते हैं इस साइकिल में कि वो कभी निकल ही नहीं पाते हैं और किसी से हेल्प भी नहीं मांग रहे, जस्ट स्टक इन इट फॉर एवर एंड फॉर एवर टाइप्स. तो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट the fact that this is about work or outperforming, it's about life. पूरी लाइफ में ही सारे एस्पेक्ट्स में ये कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है. आप लोग अपने नेबर को देखते हैं इसने बड़ी गाड़ी ले ली चलो मेरे को भी ले लेनी चाहिए. तो इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू वर्क एनी मोर. और ये तो आप बेचारे स्टूडेंट्स को लुक एट देम ओनली. उनको क्या है, अभी माई ओन यंगर ब्रदर गॉट 95% और वो भी कह रहा है ये तो ठीक है कुछ नहीं है. मतलब मैं यहाँ पे कूदने को रेडी हूँ आफ्टर लिसनिंग टू दिस स्कोर कि दिस इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. और अब इतना प्रेशर है उनके 15 साल के बच्चों पे. तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट इन लाइफ. कोटा में तो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं या DU के कट ऑफ या UPSC की तैयारी कर रहे हैं. मतलब मैं जो प्रेशर है स्टूडेंट्स पे वो तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है अभी. सो दिस मेंटल हेल्थ थिंग इज देयर अक्रॉस द entire age range. हाँ, फैमिली इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, फैमिली और फिजिकल, जैसे मेंटल हेल्थ से फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ता है. कई सारी फिजिकल हेल्थ से मेंटल हेल्थ पे भी इशू पड़ता है. मैंने देखा है कई लोग जो उसे क्या कहते हैं लॉन्ग, तो ऐसी डिजीज होती है जो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, क्रॉनिक. हाँ, क्रॉनिक डिजीज. तो उससे बैटल करते करते उनको मेंटल हेल्थ का इशू हो जाता है. मतलब दे गेट डिप्रेस फ्रॉम दैट कि
चलता जा रहा है, इसमें कुछ नहीं है, यही दवाइयाँ चलती रहेंगी, तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन या उन सब को भी दिखाने लगते हैं कि वो उसी से डिप्रेशन हो जाता है. So what do you think are the solutions for this? I think we should talk about कि आगे क्या रेमेडीज क्या हैं, कि क्या इन्वायरमेंट में चेंजेस करें, कैसे एक्सेप्टेंस बढ़ाएं. एक्चुअली थोड़ा तो जो मैं देख रहा था कि आई वॉज रीडिंग अबाउट एंड बीइंग I was part of EY, which actually has a program about this where people can access resources which are basically online resources. They are not like person to person. So there are programs, and I was also reading about companies such as Hindustan Lever and WeWork, which actually have programs in place to help their employees, because actually companies have also started realizing that because people don't come forward, they themselves have to probably reach out to their employees, because I mean for them it's obviously the commercial reason. They want their employees to always perform at their best, and if it's necessary to give them mental health programs and all that, just to make them work at the peak performance. I think they are probably doing it for that reason, but at least there are some corporates, not a lot, a few only probably, who are taking this seriously, and they are putting in programs to help their employees. So I think that is one small start, but I think what I feel is that it should be actually we ourselves should take it seriously first. बिल्कुल. Because if you are in a company which does not have such a program, then what are you going to do? You are not going to keep waiting forever. Probably you should, I think, accepting that you have a problem is the number one step. And there's I think even in India now, the problem is not accepting, but once you have accepted that you might have some kind of mental issue, that there are, I think, a lot of resources that you can reach out. I think Ashmit, you also sort of went through this phase. So how was it easy to get help in this case? पहले तो मैं एक थोड़ा कंपनी वाला पॉइंट दूंगा कि जो मैं प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में था वहाँ पे भी ऐसे ही था, तो वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी और उसमें भी डिप्रेशन का था, बट वो ओवरऑल मुझे कंपनी से ऐसा लगता है वो गिनी पिग वाला कर रहे हैं. मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा मेंटल सेटिस्फैक्शन की एक टॉफ़ी दे रहे हैं, फिर उनका परफॉर्मेंस का कुछ इवैल्यूएशन का वही रहता है, टारगेट्स वही रहेंगे, वो एम्प्लॉय उसको पढ़ के फिर से वैसे वापस आने वाले. तो इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द कोर इशू, जो प्रॉब्ली हो भी नहीं सकता आज की कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में, तो वो वाला एस्पेक्ट नहीं, बट हमें खुद ही बिल्डअप करना पड़ेगा. तो जो मेरा एक्सपीरियंस था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे समझने में काफ़ी टाइम लगा था कि एक्चुअली मुझे ये इशू है एंजाइटी का. तो मेरे साथ ये था कि बेसिकली डिप्रेशन नहीं, बट एंजाइटी का बहुत इशू था कि मुझे थोड़ा सा फियर ऑफ फेलियर होने लगा था कि अब एग्ज़ाम में नहीं होगा तो क्या होगा, अगला जॉब इंटरव्यू में नहीं होगा तो क्या होगा. तो एक्चुअली मैं एक काउंसलर से मिला था, एंड मैंने मेडिकेशन भी ली थी, टू बी ऑनेस्ट. तो उस फेज़ में जो पहली बात उसने कही थी डॉक्टर ने कि मैं बोल रहा था तभी उनको लग रहा था कि तुम्हें स्ट्रेस बहुत है, तुम बहुत ज़्यादा टाइट हो. तो पहली चीज़ तो मैंने उनसे काफ़ी बात की थी कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है. मैं ऐसे क्रॉस रोड पे था, मुझे ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली नेक्स्ट लाइफ में क्या होने वाला है. तो उसने एक बहुत अच्छी बात कही थी. उसने पहली बात ये कही कि ये सब भूल जाओ, पहले अपने आप को मेंटल स्पेस में आओ. और उसने कहा था कि मैं ये गारंटी कर रहा हूँ कि एक बार तो तुम प्रॉपर मेंटल स्पेस में आओगे तो देन यू विल रियलाइज़ कि तुम्हें क्या करना है, जॉब करना है, एग्जाम देना है, फॉरेन जाना है, कहाँ जाना है, तुम्हें खुद रास्ता अपने निकलेगा. वो कोई तुम्हें बता नहीं सकता तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है, बट ये तुम्ही को बता सके. मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं तुम्हारे शूज़ में नहीं हूँ, बट ये तुम्ही को निकालना, वो तुम तभी निकाल पाओगे तो तुम प्रॉपर मेंटल फ्रेम में होगे. उसने यही कहा था मुझे कि पहले तुम एक ब्रेक लो, और ब्रेक का मतलब ये नहीं कि कुछ ना करो, क्योंकि अगर कुछ नहीं करोगे तो वो भी एक स्ट्रेस है कि कुछ में कुछ नहीं किया, खाली बैठे. राइट. तो तुम अपना जो काम कर रहे हो, जो तुम्हें अभी समझ में आ रहा है वो करते रहो, बट जो भी मेडिकेशन और योगा और जो उसने मुझे प्रिस्क्राइब किया था वो करते रहो साथ में. 1 महीने में तुम्हें एक प्रॉपर दिमाग तुम्हारा आएगा, तब तुम रियलाइज़ करोगे तुम एग्जैक्टली कौन सा रास्ता लेना है. तो वो बात मुझे बहुत सही लगी थी उसकी. शायद अमन अभी इस पे ज़्यादा बता सकते हैं हमें, क्योंकि बिकॉज मेडिकेशन वगैरह तो थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेप है, बट उसके पहले बहुत कुछ है हम जो अपना खुद पर्सनल लाइफ में कर सकते हैं ताकि ये सब चीज़ें ना हो. Yeah, exactly. I mean, what steps do you think a person can start taking today to never sort of reach that kind of stage? So again, what I'm about to share, I'm not sure how it will be understood. I'm still going to go ahead and say it. So some of the things that I do personally in whether or not I'm feeling stressed or not is just a certain practice that I've started following. Of course, a startup life is extremely stressful, so that sort of stress is always there on me. Anxiety is there, fear is there, everything is there accumulated, and it's on a high level at all times. Like I have to be
not just high performing myself, I have to also try to make sure that everybody else is high performing and make a limited number of people do possibly the work of at least 1.5 times the people who would generally be doing it. So all these things are there, but what some of the tricks that I use are basically to understand one thing, that who are you actually? When you say that I am stressed, who is the I? If I ask Jassi. It's an interesting question. I know that it will tickle some nerves or something some people may not even understand what I'm saying, but who is the I? Okay, I am stressed. Who's I? Okay. Yeah, exactly. Is it this body? Is it am I these emotions? Am I these thoughts? Who am I? Interesting question, right? Yeah. Yes, Ashmit? बिल्कुल. तो सबसे पहले जब इसका जवाब नहीं मिलता है तो फिर वो स्ट्रेस अगर मैं नहीं हूँ तो कुछ नहीं है, वो क्या है वो? अगर मैं शरीर भी नहीं हूँ तो क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? काफी philosophical answer था. No, that's what I'm saying. I was wondering how it will be understood, but the first thing over here is who am I? So in this, I have learned most of my spiritual knowledge, I would say, from the pranic healing school, because my mother has been a pranic healer for almost 22 years now. Oh. So usme there's this line that is used, I am that I am. So just listen to it again. I am that I am. So what is that I am? It's basically saying that you are nothing and you are everything. ये एक्चुअली क्या कोई मतलब वैदिक फिलोसफी है? क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था. दिस टर्मिनोलॉजी ये अलग अलग जगह यूज हो रखी है, मैंने पढ़ा था बचपन में. फैंसी इंग्लिश जो ये यूनिवर्सल लैंग्वेज में यूज हो रहा है, दैट आई एम दैट आई एम. इट बेसिकली मीन्स कि आप हो नथिंग और आप हो सब कुछ. ये उपनिषद में या किसी में है? क्योंकि आई रिमेम्बर मेरे बचपन में दादी ने कहीं से मैंने ये सुना है ये चीज. तो सबसे पहले जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता हूँ ना, I take a back seat and I just try to think that okay, what is going to happen in the end? क्या होगा? This is a very good point कि what is end में मर जाओगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, मर जाओगे. So that's fine, you will die in the end. Okay, वो तो वैसे भी मरना है. So why should I take so much stress and die now? If I am depressed also, what is the point of living? सबसे पहले think about what is the point of living. Justy has been smiling throughout I've been speaking. I'm sure he has a lot of jabs to take on all this knowledge that I'm sharing. Just like wondering ki, what is this crap that Aman is speaking. But it makes it takes some first time you will think that what is this, maybe at least we have been interacting and you know that I am called Gyani Baba by some of you also and Dhungi Baba also, so you all are aware not of this. Dongi Gyani. No, not Dongi. So ये सारी चीजें हैं जो at a very higher deeper level they start when you start questioning the basic foundations ना, आपका बिल्कुल ही perspective change हो जाता है. You look at everything very very differently. Otherwise you keep thinking depression हो गया, medicine लो, ये करो वो करो. You are stuck in that realm of the conscious level, I would say. एक कॉन्शियस लेवल के बाद आपका एक सबकॉन्शियस लेवल आता है. माइंड इज ऑपरेटिंग एट लाइक 5 levels विच आउट ऑफ विच यू आर अवेयर ऑफ ओनली 1 level. अब आपके सबकॉन्शियस लेवल में जो पैटर्न्स चल रहे हैं आपके दिमाग में, आपको आधे से ज़्यादा तो पता ही नहीं क्या हो रहे हैं. आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये पैटर्न चल रहा है, आपको मे बी यू हैड लेट्स टेक अ लाइव एग्जाम्पल. सपोज देयर सम चाइल्ड हु हैड अ वेरी ट्रॉमेटिक experience of physical abuse or something when he was very small. तो उसके subconscious mind में ये बैठ गया है कि the दुनिया is very unsafe. I will always be in danger. तो वो उसका एक पैटर्न उसके दिमाग में हर लाइफ के एस्पेक्ट में रहेगा. अभी if he encounters one, suppose it's a female and she encounters a first bad relationship with a boyfriend, तो वो एक्सपीरियंस इसको और स्ट्रॉन्ग कर देगा उसके सबकॉन्शियस माइंड में, और उसकी पर्सपेक्टिव में ये होगा कि दुनिया इज़ अनसेफ. तो ये जो चीज़ें हैं ये सटली ऑन योर फिजिकल लेवल, ऑन द एनर्जी लेवल,
अब हमारा एनर्जी लेवल, एनर्जी बॉडी भी होती है, वो नेक्स्ट मैं बात करूँगा और जस्सी को और हंसी आएगी. लेकिन all these things have a combined impact, and when you start learning that there is much more to life than just what you see, तो ये सारा जो है ना, ये अब कभी कभार थोड़ा मेरे को हंसी भी आती है. क्या ठीक है, तू डिप्रेस्ड है, ठीक है डिप्रेस बैठा. आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. अगर कभी डिप्रेस बैठा हूँ, 1 महीने में रिजल्ट बहुत गंदा आया कंपनी का, ठीक है आई एम डिप्रेस, बट सडनली आई रियलाइज दैट इट्स लाइक आप एक बिल्डिंग में बैठे हो and suddenly you get lifted to the sky and you are able to see everything very differently. It's that kind of a shift of perspective, और तब आपको realize होता है, and that shift of perspective itself sometimes takes care of a lot of these mental health issues which are characterized in medical terms as lack of chemical or lack of something in the brain. Serotonin. But something or the other, some fancy name will be given, but it is that might be true that the chemical issue is there, but it's not like you cannot take care of that without taking medicine or something. This is important, but chemical issue है या कुछ है, that is chemical लोचा है मुन्ना भाई, but that is fact language. But उसको आप दूसरी चीजों से भी ठीक कर सकते हैं. So actually I'm sort of getting what you're trying to say, that basically you need to realize who you are and a kind of person. But so my question is like you are experienced in this because you have been in this like for 4 years. So like for a person who's just listening to this podcast, what are the resources that he could use, or you have a lot of contact with healers and all, so, or maybe what techniques they use to, probably to get you on this path. For a person who's just listening in, what would you suggest? I would suggest first thing is go to lifepositive.com. Okay. You'll get a lot of knowledge. I'll take over there. money for that marketing pitch. No, all money aside, everything aside, genuinely there's some good personally curated topics as such on which we have written a lot of content and tried to share information which can help. Secondly is to start being start being open to the fact that there is more than what they may already be knowing. सबसे बड़ा challenge यही आता है when people talk about spirituality, I think, and connected to any aspect, ki be open to realizing that there is more to yourself, and who you are is still yet a very very unanswered question, and it's not something that you can even understand. It's just something you will experience. So in terms of resources, there's no one resource available. The first thing is to start just thinking of yourself as more than physical, is what I would say. And then if it interests you, you can do your own research, maybe study some stories of how people are dealing with this situation on a day-to-day basis without medication. I'm not saying that any medication is wrong or anything, but just trying to if you are dependent on medication for your whole life, what is the point? Right. You want to get rid of it eventually, right? Yeah. But none of the doctors will ever say that you can, even if you have diabetes, for example, nobody says you can get off it. But I am totally against those logics where I believe in the power of the body, that it is so immense that anything is possible. So do you think that like a lot of, when you were researching about this topic of mental health, there are a lot of recommendation about meditation and yoga and all of these kind of things. So have you seen people benefiting from this? Is there I think real benefit to these things? Meditation and yoga is now so overused that everybody knows that meditation can help with stress or with anything. But the issue with this is the discipline that is required to do this. I myself, being in this field, I am totally indisciplined. So the point is that even if you do decide to do this, the important thing is being disciplined and following the things that you have decided that you're going to make changes. And yes, of course, yoga and meditation can help. Just sitting for 5 minutes in a day and doing meditation can have a huge impact. And you can do that multiple times in a day. You can do that just once in a day, but you should do that. It definitely helps. So I think, we have really talked about some interesting topics today from a large variety.
And to sum it up, I think yes, I think the first step is recognizing that you are facing a problem, and it's not something less macho or something in any way to know that you are a person who's facing anxiety or depression. So let's let go of that thought process, at least, that if you are mentally ill, you are a weak person. That is totally wrong. And once you have accepted it, probably I think there are two paths that we saw today. The one is, of course, what Ashmit said, that you sort of seek a psychiatrist or psychologist, like the scientific way that I would say. And they would probably, if you are in a situation that is deep enough to be diagnosed as depression or anxiety, then probably medications are the right thing. And because you need something that is going to, have a much faster effect, and in that kind of sense. And also there was a second way that I think Aman laid out, that probably I think comes in the initial stages before you are in a severely depressed or something, where you can take control of how you respond to things and how much you let them affect you. And even if they have started affecting you, you can still face the problems that you are facing, and and recognize them and start to deal with them. That I think the way of spirituality that I was, there are two ways, spirituality and science. So take the first step and do some research. And probably you will find which way suits you the best given the situation that you are in. And so and so I think that's it. Mental health is not a topic of taboo anymore. And I think people should be more open about it, and I think their lives will be much better for it. So on that note, thank you for listening in every day. It was a very interesting discussion today, and probably in a future podcast we might even try to go deeper on what Aman was saying, because I think this was much short format and we didn't have time. But we'll definitely try to take a second stab at it. Dungi Baba has lots of knowledge. Thank you everyone. Have a good day.